अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इंफॉर्मेशन गाइड में आप सब फ्रेंड्स को स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 50-50 टोटल 100 एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हैं और ये एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, which is very important like first two parts and it has 50 more MCQs। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये मटेरियल ये जो स्लाइड्स हैं उसको बल्कि फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑल मटेरियल अगर उसको चाहिए तो वो कमेंट्स में अपना ईमेल कमेंट करे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ पार्ट 3, which register normally functions as a 16-bit counter that controls the sequence in which the instructions are fetched from memory. That register is called PC. Access time for most of memories is measured in nanoseconds. A database consists of various components called objects. Which of the following term is related to the features of cascading deletion? Cascading deletion, right answer is a referential integrity. Okay. ATM stands for automatic teller machine. Who is the father of internet? Windkorf is the father of internet and father of computer science, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फादर ऑफ कंप्यूटर और मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। If a computer has more than one processor, then it is known as multiprocessor. A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is called keyboard, no. OMR, no. Scanner, that is the correct option. Okay, if you confused 4 option तो almost RMCQs टेस्ट में every MCQs के has 4 options. Okay, तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ को चेक करें, सेकंड को, थर्ड। आप फर्स्ट को चेक करें, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो उसको क्रॉस करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें से देखें मोस्ट जो उसमें से रिलेटेड टू एमसीक्यूज़ है उसको आप करेक्ट मार्क कर दें। ओके, पहले आप उसमें जो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, जिनके चांस बहुत कम है, दैट इज़ कीबोर्ड, आई थिंक दैट इज़ absolutely incorrect, that's cross scanner, that's makes sense, then OMR, no, then scanner is a correct option. Next, WW stands for World Wide Web. Gigabyte is equal to 1024 megabytes. Okay, the brain of any computer system is CPU, central processing unit. Which of the following are components of central processing unit? Arithmetic logic unit and control unit. Analog computer works on the supply of continuous electrical pulses. Which one is digital device? Select from the choice below. Digital clock is the digital device. The computer that processes both analog and digital is called hybrid computer. Okay, and what is analog computer, what is digital computer, what is mainframe computer, इनका भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तो साथ में आप इनको भी स्टडी कर लें। CD-ROM stands for compact disk read only memory. Compact disk read only memory. ALU is arithmetic logic unit. VGA is video graphics array. These abbreviations are very important. Once again, I am ये जो एब्रीविएशंस हैं ऑलमोस्ट हर पेपर में
जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है उसमें ज़रूर इंक्लूड होते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम. MSI stands for medium scale integrated circuits. Dash is called the father of modern digital computer. Charles Babbage. Who is the father of computer science? Alan Turing. Okay. A CPU contains a control unit and an arithmetic logic unit. Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? User interface. The first computers were programmed using machine language. Okay. Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. Correct answer is network. Okay, it's the combination of hardware and software that facilitates the sharing of information. Okay. Coded entries which are used to gain access to a computer systems are called passwords. Which of the following statements is true about mini computers and microcomputers? Mini computers work faster than microcomputers. Yes, this is the correct option. You can organize files by sharing them in you can organize files by storing them in folders. कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉन्ग मार्क करके आ जाते हैं, तो प्लीज़ पहले एमसीक्यूज़ को आप गौर से पढ़ लीजिए, उसके 4 ऑप्शंस को आपने अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आप उसको उनमें से जो करेक्ट आपको लगता है तो उसको करेक्ट मार्क कीजिए. व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? दैट इज प्रिंटर्स. ओके, मैनी कंप्यूटर्स कैन यूज अ सिंगल printer. Which device is required for the internet connection? Modem. What is a light pen? Optical input device. Light pen is a optical input device. UNIVAC is Universal Automatic Computer. The capacity of 3.5-inch floppy disk was 1.44 MB. EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Which of the following is a part of the central processing unit is arithmetic and logic unit? This question is I think very much repeated question. CAD stands for Computer Aided Design. File compression utilities can reduce the file size by 80%. The NT in Windows NT stands for Network Technology. In C language, .exe file is produced by linker. Which of the following is a valid statement for declaring a variable in C? You know the scientists of declaring the variables, int mux, that's great, int a b c double cell. Yes, we can declare a variable like this. So all of these options are correct. पहले आपने ऑप्शंस को, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, आप ये ऊपर स्टेटमेंट्स पढ़ी क्वेश्चन की, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए पढ़ा इंट मार्क्स, यस इट इज़ करेक्ट, उसको मार्क कर देते हैं और बाकी ऑप्शंस को रीड ही नहीं करते. तो प्लीज़ रिलैक्स होके पहले ऑप्शंस को रीड कर लें अच्छे से, देन उसके बाद आपने करेक्ट मार्क करना है. The number of bytes used by a character data type in C is 1. Junk email is also called spam. Which statement describe hackers? Hackers break into other people's computer. What type of computers are client computers? Most of the time in a client server system. Microcomputer is the correct answer. A computer cannot boot if it does not have the operating system. That is very simple and important as well. The amount of vertical space between lines of text in a document is called line spacing. Example of non-numeric data is employee address. That is non-numerical data. Okay. The number of bytes used by a character data type in C is 1. Junk email is also called spam. Which statement describe hackers? Hackers break into other people's computer. What type of computers are client computers? Most of the time in a client server system. Microcomputer is the correct answer. A computer cannot boot if it does not have the operating system. That is very simple and important.
What is embedded system? Embedded system is the computer which is the part of large systems or machine is called embedded system. When a file is saved for the first time, it must be given a name to identify it. Okay. Where are the data and programs stored when the processor use them? When the processor use them, the data and program stored in main memory. Okay. So these are 50 more questions of part 3, and it's a very important like part 1 and part 2. तो फ्रेंड्स आपने 150 MCQs आपने अच्छे से वीडियोस को अच्छे से देखना है आपने, और हर MCQs को गौर से पढ़ना है ताकि आपको MCQs अच्छे से माइंड में बैठ जाए और आप पेपर में इजीली MCQs को करेक्ट मार्क कर सकें. Thank you so much friends for watching my video. I am requesting you again, if you doesn't subscribe my channel तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. Thank you so much. See you in next part of the video. Allah Hafiz.